Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Nitin, Mukul ji, proceed. Okay. Good afternoon to everyone. First of all, I would like to invite all the participants who are there in this webinar. As we know that the whole world is suffering today with the pandemic of corona, but still we chartered accountants are very much eager to utilize this time in our studies. And in last 1.5 months, we have find that more than 50 webinars have already been organized, and every day 2 or 3 webinars are there. Today we are having a very eminent speaker with on GST input tax with us, CA Dharmendra Srivastav sir. I heartily welcome him in this webinar. Welcome, sir. Today we are also having Chairman CIRC, the young dynamic Chairman of the CIRC, CA Devendra Somani sir. Welcome, sir. We are thankful that you have joined this webinar, and I am also thankful to the Patna branch, Ranchi branch, Jamshedpur branch, and Dhanbad branch who are co-hosts in organizing this webinar. As we know that the time is very difficult for us because this pandemic has made the world very much panic, but still we are learning, and we hope that all the participants in this webinar will get the useful tips from CA Dharmendra Srivastav and get the benefit of the same. With this word, I will hand over the mic, hand over to CA Nitin Bansal, moderator of this today's webinar. Over to CA Nitin Bansal. जी आदरणीय धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, देवेंद्र सुमानी सर जी, चेयरमैन CIRC CAI, मनीषा बयानी जी, चेयरपर्सन रांची ब्रांच, पटना रांची धनबाद ब्रांच के सभी पदाधिकारी सोच के साथ कार्यक्रम को शुरू किया एवं सारे सदस्यगण देख रहे हैं। धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी सर के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करना बहुत सौभाग्य की बात है। कुछ दिन पहले we were sharing a common forum discussion on intensive brainstorming session on GST. धर्मेंद्र सर से बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ। डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस में बहुत दिन से हूँ, बट GST में उसके बाद आया और पहले से मालूम था कि आइडेंटिटी डीप, बट जब इंटेंसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुई और एक हफ्ते तक हम सप्लाई को डिस्कस करते रहे सेक्शन 7 को, तब जाके मालूम चला कि इसकी गहराई की कोई सीमा ही नहीं है, वेरी डीप। ऐसे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक है और उसमें रूल्स भी 45 तक, रूल 45 तक है। वी वर डिस्कसिंग ऑन द आईटीसी ऑन द वेरियस फोरम्स, बहुत बार आईटीसी को डिस्कस कर चुके हैं और वी आर वेरी डिस्करेटेड। जैसे धर्मेंद्र सर भी कह रहे थे कि दिल्ली और जो मुंबई की प्रैक्टिस है वो यहाँ की प्रैक्टिस से डिफरेंट है। स्टिल एसएससीज आर वेरी डिस्करेटेड फॉर दिस आईटीसी की दे ट्राई टू गेट इट एट एनी कॉस्ट। वो भूल जाते हैं कि लीगल वैलिडिटी क्या है या फिर क्या है कुछ भी। प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम किसी भी तरीके से आईटीसी को अपने हक में ले ले, क्योंकि आईटीसी हमारी जो है वो इंडिफेसिबल राइट है। हम जगह जगह जब भी जवाब देखते हैं या फिर अपील्स देखते हैं, हर जगह आइशर मोटर्स के केस लॉ के इंडिफेसिबल राइट की बात होती है। बट क्वेश्चन है कि कहीं में हम इंडिफेसिबल राइट के जो डेफिनेशंस हैं, जो वेस्टेड राइट की बातें हैं, उनको जानते कि नहीं जानते। जो प्रोविजंस इसमें लेड डाउन की गई हैं सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक, जो कंडीशंस हैं वो सीमलेस फ्लो के लिए हैं, जो आईटीसी के प्रोविजंस को बहुत जरूरी बताते हैं। मैं चाहूंगा धर्मेंद्र श्रीवास्तव सर जी शुरू करें इसको, इस सेशंस को। मैं बीच बीच में ऑडियंस में आके क्वेरीज जनरल बेनिफिट के लिए उठाता रहूंगा। एंड ऑल योर्स। Thank you, Nitin. So before starting this, we would like to have some words from our chairman also. Yeah. Bilkul. I was expecting. Yeah. Thank you, Pankaj ji. Today's learned speaker, my elder brother, CA Dharmendra Srivastav ji, CA Manisha Biyani ji, Chairman Ranchi branch,
and CA Sanjay Gol ji, Chairman Jamshedpur branch, CA Chawla ji, Chairman Dhanbad branch, CA Parvin Singh ji, Patna branch, CA Mukul ji, Vice Chairman, today's moderator Nitin Bansal ji, and a very young dynamic CP Chairman Pankaj Makkar ji, and friends, you have given me this opportunity. First of all, I am thankful to all of you. धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी का नाम रहा था तो मैं चल के पंकज जी को फोन किया, हाँ सर आज मैं फ्री हूँ, कल मैं किसी वजह से समय नहीं निकाल पाया था, तो आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन। तो पहले तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आप लोगों को कल के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बावजूद नहीं कर सका, बट दिस इज ड्यू टू बियॉन्ड माय कंट्रोल। जब भी अगर मुझे मिलते हैं तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग कि मैं आप सब लोगों के बीच में रहूं और आप लोगों के साथ सीखूं। और धर्मेंद्र जी का आज लेक्चर था तो मैं आज भी श्योर नहीं था कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, थैंक्स टू कोविड की हम रिमोट एक्सेस से ब्रांच ऑडिट कर रहे थे, तो हमने कुछ ऑडिट करा और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने उनको मेल किया, बाकी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, फिर वेट हो रहा था, मैंने कहा चलिए हम तो है धर्मेंद्र जी को सुन लेते हैं, बाकी ऑडिट कल करेंगे। मेरी चूंकि सीजन चल रहा है तो मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा कि अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें, बट एट द सेम टाइम हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, तो आप ऑडिट जब भी करें तो चूंकि अभी मैं करके आ रहा हूँ, अभी काफी मेंबर्स ऑडिट कर रहे हैं जो कि आज के सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं दो बातें उसमें कहना चाहूंगा। जब भी आप ऑडिट करें, रिमोट से भी करें, तब भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखें। एक बार हमारे पास हम सोचते हैं जो हम ऑडिट पूरा देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट हमारा डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट। तो आप मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को परफेक्ट रखें। रही बात इनपुट टैक्स क्रेडिट की, आज का जो सेशन है वो सेशन जो है वो है आज का इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूडिंग ISD एंड मैनर ऑफ एक्सेस क्रेडिट विद प्रैक्टिकल केस स्टडीज। तो धर्मेंद्र जी श्रीवास्तव अगर स्पीकर हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की इस सेशन के बाद कोई क्वेरी बाकी रहेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो नाम सजेस्ट किए हैं आपको, आपने सभी नाम उसमें से रख लिए हैं, तो 5 दिन के अंदर में तो आपको पूरे 5 दिन के सेशन के बाद ये नहीं लगेगा कि आपने हमें अच्छे स्पीकर्स के नाम रेफर नहीं किए थे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और बहुत ज्यादा अब मैं समय आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि हम सबको धर्मेंद्र जी को सुनना है और मैं भी इसमें उनको सुनने के लिए ही यहाँ उपस्थित हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मनीषा जी, परवीन जी और अदर ब्रांच चेयरमैन, ब्रांच मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स फॉर इनवाइटिंग मी। और स्टे होम, स्टे है सेफ। तो आप अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें और इसी तरीके से अपने नॉलेज को एनरिच करते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है हम इस पीरियड में जो वर्चुअल ऑफिस की बात कर रहे हैं, हम जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम नई नई चीजें हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे हो सकता है पोस्ट कोविड के बाद हमारी वर्किंग स्टाइल को, हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत तरीके से प्रभावित करेगी। अब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक्सट्रीमली एबनॉर्मल कंडीशन है। आप इसमें सावधानी ही इसमें सुरक्षा है। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। नितिन जी सर। पंकज जी, लेट स्टार्ट। Yes. Thank you, Devendra ji, Somani ji, Chairman CIRC, my good friend Pankaj ji, Manisha, and Mukul, Pravind from Patna branch, my good friend Nitin Bansal, very knowledgeable person. Thank you all branches, Patna, Ranchi, Jamshedpur and Dhanbad. Thank you for providing me opportunity to discuss topic, very important topic, input tax credit. And before starting discussion, let's take care of our health, our family. And I'm very happy to see Devendra Somani after a long time, and all friends from various branches. Friends, I will take few seconds so that I can share my PPT. And as Nitin has said, we will discuss issues relating to input tax credit.
in a very practical manner. Just wait for a few seconds. I am just sharing PPT. Nitin, जी सर. are you able to see PPT? Yes sir. ये visible है sir PPT with हाँ? the case. अच्छा अच्छा. Okay. Friends, today we are going to discuss basic provisions of input tax credit, input service distributor, and manner of recovery of excess credit. All of us are aware that input tax credit is very important aspect of GST. And friends, you will be agree that input tax credit, indirect tax is having three important limbs. The first is to calculate your output tax liability. Output tax liability includes liability in the capacity of forward charge, in the capacity of inward charge. We call it RCM. And once you had calculated your output tax liability, the second important limb is to identify eligible input tax credit. And the third limb is to calculate your net tax liability, and this net tax liability is to be discharged by way of utilization of input tax credit or by way of payment through cash ledger and reporting in proper form. Today we will discuss second important limb, that is input tax credit. And this input tax credit is basically to eliminate cascading effect and to collect tax in a state where service or material is consumed. When I was discussing with Nitin, and we both were agree कि जिस एरिया में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. कोई भी आदमी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लूज नहीं करना चाहता है, मिस नहीं करना चाहता है. बट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस. अगर वो सब कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस हम लोग पूरा नहीं करते हैं, देन लेटर ऑन डिपार्टमेंट में रेज ऑब्जेक्शन, may issue so-called notice under section 73 or 74 of GST Act, and they may proceed for recovery of such tax. Let me start with a very important and fundamental principle, that where is the onus? Naturally, I am discussing and I am recalling section 155 of CGST Act. And I will request all of you that whenever you are trying to deal with any problem of input tax credit, please remember section 155. 155 says that where any person claims that he is eligible for input tax credit under this act,
the burden of proving such claims shall lie on such person. इसका मतलब यह है कि जो भी आदमी अपने पीरियोडिकल रिटर्न्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करता है, वो उस क्रेडिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये स्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी उस रजिस्टर्ड पर्सन की है. And probably this is the fundamental departure from earlier law. And once I am taking reference of earlier law, it is important to recall that in earlier era, input tax credit was governed by Sinvet credit rules. इसका मतलब यह होता था कि जो भी क्रेडिट को अवेल करने की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होती थी, और अगर उस प्रोसीजरल कंप्लायंस में कहीं पर कोई चीज भूल चूक हो जाती है, कोई क्लेम, कोई प्रोसीजरल कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं, सो देयर वर अ नंबर ऑफ डिसीजंस फ्रॉम द ट्रिब्यूनल एंड वेरियस कोर्ट्स that department cannot detach benefit of input tax credit or Sinvet credit merely by some procedural default. But in GST, conditions to claim input tax credits are being incorporated in the shape of provisions in CGST Act and corresponding state GST Act. It means that it appears, and it is my personal opinion, that whatever preconditions are there, whatever post conditions are there, friends, you will appreciate that I am using two terms. Preconditions यानी इनपुट क्रेडिट अवेल करने की प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशंस. जो भी कंडीशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम उसको दो पार्ट में कर सकते हैं, प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशंस. What is the meaning of input tax credit? The term input tax credit is being defined in section 2 subsection 63, and it says that input tax credit means the credit of input tax. Term input tax is being defined in subsection 62, and very simple definition: input tax in relation to a registered person. Friends, input tax credit under GST Act can be availed only by a person who is registered under the provision of GST Act. If you are not registered under the provision of GST Act and you are liable to pay tax by virtue of any proceeding from the department, you have to discharge your output tax liability. But in absence of registration under the provision of GST Act, I am of the firm opinion that you shall not be eligible for availing input tax credit. And probably this is the reason why there is an arrangement in GST Act that if any tax is being paid under section 74, 129 or 130, such payments shall not be eligible for input tax credit. So to calculate eligible input tax credit, there should be input tax, and input tax in relation to registered person means CGST, IGST, union tax, on any supply of goods or services or both. In this definition, they are saying any supply of goods or services or both.
एक बार चेक कीजिएगा, शायद स्ट्रीमिंग जो है वो रुक गई है शायद। There was some issue पंकज जी, on स्ट्रीमिंग connection of धर्मेंद्र जी के connection में कुछ issues थे. He is just connecting in next few seconds. Just a halt of few seconds. ओके। Listeners are just requested to have a patience of 2 minutes. Apology for the interruption. अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड किसी से कोई क्वेरी हो तो वो पोस्ट कर सकता है, हम बीच बीच के सेशन में उसको लेते रहेंगे, रेज करते रहेंगे उसको। आप चाहें तो अपने उसमें मैसेज कर सकते हैं। It's live now, so पंकज, हाँ सर, Correct, आप sir. ऑडिबल है सर? okay. Can we restart? हाँ Yeah, सर, sir, स्टार्ट continue, कीजिए sir. सर, स्टार्ट Yeah, कीजिए। We had a okay. 1 minute pause. Okay, I'm sorry, due to some technical reason. Friends, I was discussing eligibility criteria of availing input tax credit. Eligibility criteria can be discussed in two parts: pre-availment of credit, post-availment of credit. Pre-availment of credit, the important criteria is that every registered person shall, meaning thereby only registered person can avail input tax credit. We had already discussed. Be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services, or both. Term goods and services is being defined in respective subclauses. I am not going on that part. Which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. It is the responsibility of the claimant to establish whether whatever input tax credit is being availed on input service and capital goods, it is being used in the course or furtherance of business. और यहीं से एक ब्रांच निकलती है कि अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल करी है उसका यूज अदर देन बिजनेस पर्पज से हुआ है या एग्जिम्प्ट सप्लाई के अलावा किसी सप्लाई में आपने उसको यूज किया है, देन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अप टू दैट एक्सटेंट. And I will discuss this particular aspect in detail when I will discuss section 70. If I am a registered person, I am a trader, I am a manufacturer,
and I'm calculating my input tax credit at the time of filing up 3B, then all these tests must be executed, must be done by every registered person. Whether I am registered, answer is yes. This credit is for supply of goods, services, or both, and it is intended to be used or to be used in the course or furtherance of business, and such credit shall be credited in your electronic credit ledger. Friends, I am recalling very important aspect. The moment we are discussing that eligible input tax credit will be transferred, will be reflecting in your electronic credit ledger, then we are having two important aspect जो हमारे सारे clients कई बार discuss करते हैं. Amount reflecting in electronic credit ledger is availment of credit, and the second term is utilization of credit. Whether availment of input tax credit or reflection of input tax credit in electronic credit ledger, and subsequently if it has been established that this credit ledger is reflecting non-eligible input tax credit, and department is going to initiate proceeding against you, whether they can recover this amount under section 73 or 74 along with interest or not. And this matter, this very important matter, is being analyzed by Honorable Patna High Court in case of Commercial Steel Engineering versus State of Bihar, civil writ petition number 2125, जहां पर हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए ये कंक्लूड किया कि डिपार्टमेंट रिकवरी प्रोसीडिंग तभी इनिशिएट कर सकता है अंडर सेक्शन 73 जब उस क्रेडिट की वजह से रिकवरी जनरेट हो रही हो. इसका मतलब यह है कि अगर आपने उस क्रेडिट को अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट अप कर दिया है, ओनली देन डिपार्टमेंट कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग. फ्रेंड्स, आई कैन रिकॉल अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस जजमेंट फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट, हेलो मिनरल्स, और उसमें भी यही कहा गया था कि रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज मियरली ए बुक एंट्री unless taxpayer is not utilizing that availed input tax credit against output tax liability. There is no loss of treasury, and once there is no loss of treasury, there is no question of levy of interest and penalty. So friends, you are having very important judgment from your jurisdictional high court. I'm not denying the fact that this judgment is in context of transitional credit under section 140. But the moment you will read the judgment, Honorable Court has tried to establish, differentiate between availment of input tax credit and utilization of input tax credit. निश्चित रूप से जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्कस करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करना आपका राइट्स है. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट may come forward with certain conditions and restrictions, and since this is being incorporated in section 16, it means that my right to avail input tax credit is subject to such restriction and conditions. Now someone may raise a question whether government
or any executive body can impose any artificial restriction to refrain a registered person from availing input tax credit. We will discuss later on. Next important condition for availing input tax credit, that every registered person must have copy of tax invoice debit note in his possession. बहुत बार जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि अगर वो ट्रांजैक्शन, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है, मटेरियल या सर्विस को हमने रिसीव किया हुआ है, तो merely because the registered person is not having copy of tax invoice, whether department can deny input tax credit. It appears to me from plain reading of this section that it is mandatory to have copy of tax invoice or debit note. In addition to having copy of tax invoice or debit note, registered person has received the goods or services or both. यानी कि जब तक मटेरियल आपको रिसीव नहीं हो जाता तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते. बट एक्सप्लेनेशन इज क्लैरिफाइंग कि अगर ऐसा कोई मटेरियल या सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन के डायरेक्शन पर किसी और को भी डिलीवर्ड हो गया है, जिसको हम सामान्य भाषा में बिल टू शिप टू कहते हैं, उस कंडीशन में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन या मनाही नहीं है. फ्रेंड्स, another important condition is that supplier has paid the said amount of tax to appropriate government in cash or by way of utilization of input tax credit admissible in respect of said supply. इस प्रोविजन को डिस्कस करने का मेरा दो वजह है. एक वजह यह है कि मैं एज ए रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता हूं. टैक्स इनवाइस की कॉपी मेरे पास है, मैं रजिस्टर्ड हूं, मुझे मटेरियल मिल गया है. उस टैक्स इनवाइस का ड्यू टैक्स सप्लायर ने गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया या नहीं जमा कर दिया है, रिसिपिएंट इसको कैसे चेक करेगा या कैसे उस कंडीशन को इस्टेब्लिश करेगा कि उसने पूरा कर दिया. दूसरा पार्ट इस कंडीशन का यह है, क्लॉज सी ये कहता है कि सप्लायर ने कैश में टैक्स का पेमेंट कर दिया हो बाय वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई. हाउ रिसिपिएंट shall be in position to justify whether this particular due tax is being discharged, it's being paid, and if it is being paid out of input tax credit, whether that input tax credit was admissible or not. There is no mechanism. हम लोग जब भी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट का डिस्कशन करते हैं, मैं अपने सारे प्रोफेशनल ब्रदर्स को ये एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो कंडीशन है वो सेक्शन 16 की एक मैंडेटरी कंडीशन है जो सबको फॉलो करनी है. लेकिन जो क्लेमेंट है, जो रिसिपिएंट है, इस कंडीशन को किसी भी कीमत पे वेरीफाई नहीं कर सकता है. क्या रिसिपिएंट से किसी ऐसे कंडीशन को जस्टिफाई करने या ऐसी कंडीशन को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है which appears impossible? I am of the opinion that appropriate note should be incorporated at appropriate place, that in absence of appropriate mechanism, we are not in position to verify whether this condition is being fulfilled by the supplier or not.
Another condition is that returns prescribed under section 39 are being filed by the claimant. Now, by virtue of section 61, rule 61(5), GSTRTB is the appropriate return under section 39. Friends, you will appreciate that post conditions to claim eligible credit in that context, second proviso to section 16 is very important. This proviso says that it is mandatory to pay amount towards the value of supply along with tax payable thereon within 180 days from the date of invoice. Otherwise, an amount equal to ITC availed shall be added back to the claimant output tax liability with interest. The first part of this discussion, this proviso, is how to calculate 180 days. 180 days from date of invoice or 180 days from the date when this transaction is being entered in your books of account. I think this proviso is very clear, and they are saying that 180 days from date of invoice. If you are entering that transaction after 3 months, 4 months, 5 months, it will not change proposition. The claimant who is claiming eligible input tax credit has to discharge consideration of tax invoice within 180 days. Another part is whether entire value, full value of that tax invoice or debit note should be paid. Take a situation, मैंने एक टैक्स इनवाइस जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी, 18,000 रुपए उसके ऊपर जीएसटी लग करके आया, मैंने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट सिस्टम ऐसा था, क्रेडिट अरेंजमेंट ऐसा था कि 180 दिन तक केवल हम 50% बिल अमाउंट को पे कर पाए। 180 दिन गुजर जाते हैं, मुझे पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट उस इनवॉइस का रिवर्स करना है या प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिवर्स करना है। इस प्रोविजो को पढ़ने में एक स्कूल ऑफ थॉट यह है कि अगर कुछ पार्ट भी आपने पेमेंट नहीं किया है तो इंटायर आईटीसी मस्ट बी रिवर्स। बट आई एम हैविंग डिफरेंट व्यू। If you will read Rule 37, Rule 37 is talking about a reversal, proportionate reversal. So if you will read second proviso to section 16 subsection 2 with Rule 37, it suggests that proportionate ITC must be reversed. कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर आपको और मुझे क्लाइंट का ये फोन आता है कि अगर इनवॉइस डेट से 180 दिन इस कोविड पीरियड में गुजर रहा है और मैं उस इनवॉइस का पेमेंट नहीं कर पाता हूं, तो मुझे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है क्या? Let us discuss this proposition in the context of latest notification number 35/2020 dated 3rd April 2020. Friends, this notification is very important और इस नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन दोनों पक्षकार को
जब मैं पक्षकार कहता हूं इसका मतलब डिपार्टमेंट और एसएससी उन दोनों को कंप्लायंस की कुछ राहत देता है, कुछ रिलैक्सेशन देता है. फर्स्ट वी शुड read relevant part of this notification. This notification provides as under. Friends, I am reading this relevant part in the context whether second proviso of section 16 subsection 2 is this clause relevant for the compliance or not. क्या इससे कुछ राहत हमको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है. Where any time limit for completion or compliance of any action by any authority or by any person has been specified in or prescribed or notified under the said act, which falls during the period from 20th day of March 20 to 29th day of June 2020. Let us concentrate on this phrase. Any time limit for compliance between 20th day March 2020 to 29th day March June 2020. ये जो 180 दिन का पीरियड है, अगर वो 180 दिन का पीरियड इस पीरियड में खत्म हो रहा है 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में, तो क्या नोटिफिकेशन 35 के हिसाब से मुझे आईटीसी को रिवर्स करना या उसको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में दिखाना जरूरी है क्या? This particular part of this notification is also applicable to the assessee, because they are using word by any authority or by any person. By any person means other than authority. Other than authority means taxpayer. So I am of the opinion that notification number 35 will come forward for rescue, for relief, for protection of the taxpayer. और 180 दिन की वजह से जो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में टैक्स डिक्लेयर करना था उसकी जरूरत नहीं. नोटिफिकेशन 35 कुछ सेक्शन को एक्सक्लूड करता है. वो रजिस्ट्रेशन है, कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है. बिकॉज आज के डिस्कशन से वो रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम उसमें बहुत अंदर तक डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं. फ्रेंड्स, in day-to-day practice, in the context of input tax credit, another important precondition is, rather I should say post condition is that compliance of section 16 subsection 4. आज ही मेरे पास किसी क्लाइंट का फोन आया कि सर 18-19 की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी छूट गई है, क्या अब वो क्रेडिट मिल सकती है क्या? इस प्रैक्टिकल इशू को एड्रेस करने से पहले हम सबके लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट क्या है. सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर, टेक द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल 18-19, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं? अगले साल के सितंबर महीने की जो सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल करना है, यानी 18-19 का सितंबर 19 का मतलब 20 अक्टूबर 2019 को जो आपने जीएसटीआर 3 भी फाइल किया, तब तक आप उसकी क्रेडिट ले सकते थे. The second condition is our furnishing of the relevant annual return whichever is earlier.
हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो एनुअल रिटर्न फाइल करना है उसका ड्यू डेट बढ़ा करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया। मीनिंग thereby there are two conditions to avail input tax credit for the financial year 18-19. One is due date of filing GSTR 3B for the month of September 2019 or due date or actual filing of the annual return. सितंबर 2019 का जो रिटर्न फाइल करना था जीएसटी उसका ड्यू डेट निकल गया है। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट अभी एक्सटेंड हुआ है, बट विच दे आर यूजिंग द वर्ड विच एवर इज अर्लियर, मीनिंग देयर बाय इन स्ट्रिक्ट मैनर we are not eligible to avail input tax credit of any input on any input tax paid on input service or capital goods which remained unclaimed till the month of September 2019. But we are, once we are saying we are, meaning thereby trade and manufacturer are expecting similar proviso which was inserted for the financial year 2017-18. 17-18 को की जो क्लेम करने की ड्यू डेट है 31 मार्च 19 तक कर दिया गया था। We are expecting that government will consider present situation of COVID-19 and this condition must be relaxed not only for 2018-19 but 19-20 also, because for claiming input tax credit for the financial year 19-20 will expire in the month of September 2020, meaning thereby whatever GSTR 3B we are going to file for the month of September 20, right, that month that GSTR 3B will be the last month। और इधर हम सब देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से कितनी डिस्टर्बेंस है। Friends, the first limb of discussion was what are conditions to avail input tax credit. Now the second important part of discussion is that if we are not using input tax credit exclusively for business purpose or exclusively for taxable supply, meaning thereby part is being used for business purpose, part is being for other purposes, part supply is being used for supply of exempt supply and part is being for other than exempt or taxable supply, then what is the proposition? This proposition is being dealt or governed by section 17. I will take it in very brief. Friends, I am not going to discuss rule 42, rule 43, because rule 42, rule 43 is very, although this is very important part of discussion, but it is very voluminous. I mean, it required another 1.5 hours for discussion of this rule 42 and 43. We are going to discuss that if you are using input tax credit for business purpose and for other than business purposes. If you are using for business purpose, then full ITC is available. If you are using for other than business purpose, then ITC is not available. And if this is the situation, then how you will calculate your eligible input tax credit? How you will calculate portion of the credit which should be reversed, and mechanism is being provided in rule 42. And in the simple words, जो आपका exempt और taxable turnover होगा उसका जो रेशियो होगा
उसी रेशियो में ये क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा। In the similar manner, if you are using your input tax credit partly for taxable supply, please remember taxable supply includes zero rate supply. If you are having export turnover, domestic turnover is taxable turnover, then entire input tax credit is available. But if you are utilizing credit for non-taxable supply, exempt supply, nil rate supply, then ITC is not available. In case of common input tax credit, proportionate credit required to be reversed and prescribed manner is being notified or specified in Rule 42. हम लोग सर्विस टैक्स के टाइम से निगेटिव लिस्ट के बारे में परिचित हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में भी एक निगेटिव लिस्ट है। Why I am calling is negative list? Negative list means that government is saying that I'm not going to allow input tax credit on A item, B item, C item. And once items are being prescribed, notified in a particular section, subsection as a negative list, the logic and rationality is not important. आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होंगे जो आपको ये बोलते होंगे कि सर हम तो सर्विस सेक्टर में हैं, मेरी जो पूरी टर्नओवर है वो जीएसटी के दायरे में आती है, मुझे मोटर व्हीकल का क्रेडिट क्यों नहीं मिलता, या बी का क्रेडिट नहीं मिलता, सी का क्रेडिट नहीं मिलता, डी का क्रेडिट नहीं मिलता, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है। द आंसर इज ओनली दैट items specified in section 17 subsection 5 called negative list and input tax credit is not permissible. First part is motor vehicle. There is important amendment in this clause. Now they are saying input tax credit for motor vehicles having approved seating capacity of not more than 13%, including the driver, will not be available unless this input supply is not for making further supply of such vehicle. If I am engaged in business as car dealer, इसका मतलब ये नहीं उस कार का मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा. There is exclusion under negative list. Exclusion under negative list means eligibility of input tax credit. So if I am using motor vehicles for further supply of such vehicles, transportation of passenger, training of driving such vehicles, then such registered person is eligible to take input tax credit. I'm not going to discuss all clauses of section 17(5). I am moving to clause C and D. Friends, these clause C and D are very important in my opinion. Negative list is saying that works contract services, except where it is an input service for further supply of works contract service, ITC is not available.
साधारण भाषा में जिस इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं ये जज करने जा रहा हूं कि मुझे इस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है या नहीं है, और अगर ये आइडेंटिफाई होता है तो नेचर ऑफ इनवर्ड सप्लाई और इनपुट सर्विस इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. Friends, it shall not be out of context to recall definition of works contract in the context of service tax era. The fundamental difference, I'm not going in very deep discussion. In service tax time, works contract includes construction contract for movable property and immovable property. But in GST, works contract service means service in relation to immovable property only. As per my understanding, input tax credit on works contract service is not allowable. Is not allowable. Unless you are not using such service for further supply of taxable service called works contract service. In the similar manner, clause D is saying goods or services received by a taxable person for construction of an immovable property on his own account. Friends, what is the difference between clause C and clause D? Clause C is dealing with a situation where you are constructing, where you are executing, where you are engaged in supply of service or goods for other person, and clause D is dealing with the situation where you are constructing any immovable property on his own account, including when used in course or furtherance of business. एक्सक्लूजन क्लॉज कहता है कि अगर आप ये एस्टेब्लिश भी कर देते हैं कि जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंटेंडेड यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज फॉर बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इवन दो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, renovation, additions, or alteration or repairs to the extent of capitalization to the said immovable property. Very important and very interesting proposition. अगर मैं अपनी ही बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन कराता हूं, उसको मैं रिनोवेट कराता हूं, उसमें कोई एडिशन करता हूं, मैं कोई अल्टरेशन करता हूं, और मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको कैपिटलाइज नहीं करता हूं. Let us recall the definition of capital goods in GST. Capital goods means amount up to the extent it is being capitalized in your books of account. तो अगर आप इस तरीके की सप्लाई को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज नहीं करते, देन यू आर नॉट फॉलोइंग इन एक्सक्लूजन क्लॉज. से you are running a warehouse or godown, office building, factory building, and there is a repairing, renovation, regular repair, renovation, and you are paying certain amount to your contractor who is charging GST in his tax invoice, and if you are debiting that amount in your books of account under the head repairs and maintenance account, I am of the opinion that you are eligible to take input tax credit. Friends, why I had decided to discuss clause C and clause D? Because there is an important judgment from Odisha High Court in case of Safari Retreat Private Limited.
2019-25 GSTL 341. I'm of the opinion that this judgment is historical judgment. Although SPL is being filed in Supreme Court, and let us wait for judgment from the Honorable Supreme Court. But this judgment has said that GST is a value addition tax, and to avoid cascading effect, input tax credit must be allowed at each and every stage. So if a person is constructing warehouse, if a person is constructing godown intended to be used for furtherance of business or for letting out that particular godown, then input tax credit and tax paid during construction of such property must be allowed. But again, I am requesting all of you that this is important judgment from Odisha, Honorable Odisha High Court, but we should wait for judgment from the Supreme Court. There are other additional conditions which we should check, we should verify whether we are eligible to take input tax credit in the context of all these conditions. Goods or services are both on which tax has been paid under composition scheme. मैंने पहले ही बताया इस पे क्रेडिट नहीं मिल सकती है. Goods or services are both received by a non-resident taxable person except on goods imported by him. Goods or services are both used for personal consumption. This legal proposition is very clear, no doubt of interpretation. But my practical problem is how you will identify. I mean, once I'm saying how you will identify, say I am working as a GST auditor. Unless assessee is not declaring that these goods or services are being identified as personal consumption, it is very difficult for a GST auditor or for a GST consultant to identify unless there is no any specific, flag during examination of records or transaction. But as far as law point is concerned, law point is very clear that input tax credit is not available in the case of personal consumption. And the most controversial and debatable point is clause H, subclause H. Goods lost, stolen, destroyed, written off, are disposed of by way of gift or free sample. पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्कशन हुआ है सेक्शन 17(5) में तो इस क्लॉज का ही डिस्कशन हुआ है. It is my responsibility to share my opinion, my opinion as far as this clause is concerned. साधारण तरीके से जब मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, business loss is not covered under this clause. Goods lost is not goods loss. Meaning thereby, if there is in any shortage or loss of goods which occurred in normal course of business, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो जो है इस क्लॉज में कवर्ड है और उसको हमें आईटीसी रिवर्स करनी है, नॉट एट ऑल. Although
it should be judged case to case based on fact to fact, but we should be very careful that which facts shall be affected, which case will be affected by this clause or not. Any tax paid under section 74, 129, 130 is not eligible for input tax credit. Again, very controversial area, that if any tax is being collected on any supply under section 74, 129, 130, why credit is not allowable, why such payment is not eligible for input tax credit. But please recall section 16 subsection 1, they are saying that input tax credit is subject to certain conditions and restrictions, and once conditions are being incorporated in law, we have to follow those conditions unless there is any amendment in the law. Once we are discussing about conditions and restrictions, whether government can impose any artificial restriction, naturally I am trying to create a platform to discuss rule 36(4), which was introduced with effect from 9th October 2019. दो फेस रहे, 9 अक्टूबर 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक गवर्नमेंट नोटिफाइड नोटिफिकेशन नंबर 49/2019, and in accordance with this notification, I am eligible to avail input tax credit up to extent of credit reflecting in GSTR 2A plus 20% of reflecting credit on behalf of non-reported tax invoice or debit note. At the outset, we are witnessing from the very first day by 2A is auto-populated information based on mercy of information furnished by my supplier. And please remember, there is no such restriction in section 16, 17, 18, 19. So first part of discussion may be whether rule 36(4) is ultra virus, is sustainable in court or not. Probably I am not the right person to make any judgment because matter is pending in various high courts, and let us wait for the judgment from high courts. But meantime, we are trying to discuss what is the present scenario and how to comply this provision, because this is a very important provision. और हमारे, मैं पहले भी नितिन से डिस्कस कर रहा था कि जिस एरिया में हम प्रैक्टिस करते हैं वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम करना या ये कहना कि ये क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी बड़ा मुश्किल प्रपोजिशन होता है. So first proposition is that from
9th October 2019 to 31st December 2019, credit was restricted to the reported credit plus 20%. Friends, you will recall that they are saying 20% of total eligible credit. इसका मतलब यह हुआ कि पहले कितना 2A में क्रेडिट आ रहा है पर्टिकुलर डेट में 11th डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, उसमें से हम नॉन एलिजिबल क्रेडिट हटा दें, यानी 17.5 वगैरह को हटा दें, फिर जो क्रेडिट बचती है उसको एलिजिबल क्रेडिट, उस एलिजिबल क्रेडिट का 20%. Probably government was not satisfied with this 20%, so subsequently they reduce 20% to 10% with effect from 1st January 2020. फ्रेंड्स, हम सब लोग जो लोग प्रैक्टिस में हैं, हमें मालूम है कि इस रूल की कंप्लायंस कराना not it is very difficult task, very difficult task. Practically it is very difficult, and particular when my client is saying that I'm registered, I'm having tax invoice debit note, purchases are being in the course or furtherance of business, material is being received, services are being received, भाई मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगी? But fortunately, in the background of discussion of legality of this rule, government was kind enough, they had issued a notification 30/2020 on 3rd April 2020, and as per this notification, they are saying that restriction of 10% is being postponed. Friends, this notification is not saying that rule 36(4) is not applicable. No. वो कह रहे हैं कि कंडीशन रहेगी, केवल एक रिलैक्सेशन कह रहे हैं कि जो 10% का रिस्ट्रिक्शन होता था वो फरवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक का, जो हम मंथ वाइज कैलकुलेशन करते थे, मंथ वाइज हम रिवर्सल करते थे, नाउ दे आर सेइंग कि इन महीनों का, यानी फरवरी 20 से लेकर के अगस्त 20 तक का क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेना है. क्यूमुलेटिव इफेक्ट कब लेना है? जब आप सितंबर 2020 का मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, यानी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, उसमें आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट ले सकते हैं. सितंबर का सितंबर में ही लेना है. इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप अपना जीएसटीआर रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, से सपोज योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़ रुपी, then how to calculate eligible quantum of input tax credit in the light of rule 36(4). My understanding is that you may avail input tax credit as per your books of account without considering input tax credit reflecting in GSTR 2A, subject to fulfillment of other conditions such as eligibility of input tax credit, subject to receipt of goods or services, you may avail full input tax credit. और ये जो कैलकुलेशन है, that should be exercised when you are going to file GSTR 3B for the month of September 2020. But what is my practical submission, practical advice to all of you? We should continue exercise of reconciliation invoice wise, so that
we may utilize this time gap, time space available from today to September 2020. We should identify those cases which are not reflecting in your 2A. इसका मतलब कोई भी वजह हो सकती है, सप्लायर ने टाइम से अपना रिटर्न नहीं फाइल किया बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन है, so that you can identify cases which are not reflecting in your 2A, and you may contact to your supplier, you may suggest to your supplier, you may request to your supplier that please submit requisite information so that my liability to reverse input tax credit can be minimized. मैं हमेशा एक प्रोफेशनल डिस्कशन में कहता हूं, लॉस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज कैश लॉस ऑफ योर बिजनेस. So my discussion is limited up to postponement of compliance of Rule 36(4). एक्सक्यूज मी सर. Sir, yeah. सर यहाँ पर थोड़ा इंटरप्शन करना चाहूंगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. कुछ सर क्वेरीज हैं सेक्शन 16 और 17 को लेके, उसको यहाँ से थोड़ा क्लियर कर ले सर. हाँ, we can attend queries. यस सर. सर जैसे पहली क्वेरीज है सर, जैसे सेक्शन 16(4) की बात होती है, तो रिसेंटली भारती एयरटेल का जो 5 मई को जो डिसीजन आया जो दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके रिगार्डिंग जो उसने कहा कि 26/26/2017 जो सर्कुलर था, वो इम्प्रूव सर्कुलर जो है वो खुद ही फ्लॉड सर्कुलर था वो, और उस सर्कुलर को उसने पहले के डिसीजन को कोट करते हुए कहा कि सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी, सर्कुलर रेवेन्यू पे बाइंडिंग है, और रेवेन्यू अपने जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं उनके कारण जब वो ऑपरेशन में GST 2 और 3 को नहीं ला पाया, तो 26/26/2017 जो पोस्ट पीरियड में आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो रेक्टिफिकेशन अमेंडमेंट की बात करता है, और जो जिस पीरियड में हमने रिटर्न फाइल किया उस पीरियड में हम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको पूरी तरीके से नकार दिया और भारतीय एयरटेल को उन्होंने बोला कि आप क्रेडिट ले सकते हैं. तो मेरा सर सवाल ये था कि ये जो डिसीजन है सर, ये 16(4) में कहाँ तक वैलिड रहेगा सर? जैसे 16(4) में भी सेम इश्यूज आती हैं कि हमने सितंबर तक का जो क्रेडिट है बाद में लिया, हमारे पास GST 2 और 3 फंक्शनिंग नहीं था, हमने उसको बाद में ले लिया. तो क्या ये डिसीजन 16(4) के जो सेक्शंस हैं उस पे एप्लीकेबल हो सकता है सर? Pankaj, ये I mean कि this judgment of Bharti Airtel is the very important judgment pronounced on 5th May, and Tarun Gulati, my friend, has argued this particular case. But entire discussion is in the context that if government is not providing facility to rectify mistakes, and please remember that as per facts of this case, the dispute period was July 2017 to September 2017. At that time, even this report GSTR 2A was not generating. So I'm of the personal opinion that this judgment has opened area and space for all those restrictions, we should call conditions, time period, subject to this, subject to that. And please recall, please remember, Section 41, Section 42, Section 43 is not operational. They introduce another Section 43A. And operation of that section is being postponed for 1st October 2020. So your question is that whether judgment in case of Bharti Airtel will help in case of Section 16(4).
it is too early to comment on this issue because compliance of section 16(4) is mandatory and compulsory, and we should wait whether government is going to challenge judgment of Honorable High Court and Supreme Court or not. Till that time, the first part of discussion may be that until we are not having any jurisdictional judgment or judgment from the Supreme Court, we should try to comply section 16(4), because cost of litigation is very high right now. Yes. And as per input tax credit is concerned, all clients are very sensitive, right? These development pronouncements must be used as last option, right? Yes sir. Yeah. सर मुझे पर्सनली भारतीय एयरटेल के डिसीजन में दो फ्लॉज नजर आते हैं सर। एक तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन सर इसको दिया तो उसने आप एंड कंपनी जो गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि 3B इज नॉट ए वैलिड रिटर्न, उस केस का भी थोड़ा सपोर्ट लिया। तो वो वाला केस तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे भी कर दिया, मेरे ख्याल से स्टे कर ही दिया। बिल्कुल और सर यस सर, और भारतीय एयरटेल के केस में जो तरुण गुलाटी जी ने जो आर्ग्यू किया था उसमें बोला कि जब ईयर खत्म भी हो गया उसके बाद भी भारतीय एयरटेल को ये नहीं पता लग पाया था कि उसकी इतनी सारी क्रेडिट थी। जब यूए ऑपरेशनल हुआ 2018 में तब उनको पता लग पाया। तो सर ये थोड़ा सा इमेजिनरी पॉइंट है कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतनी अकाउंटिंग सॉलिड होने के बावजूद दे कुड नॉट इंडिकेट कि उनकी कुछ क्रेडिट बची हुई है पहले से। तो सर दो फ्लॉज था सर। That's why Nitin, what I am with it is my humble opinion, without going into the merit of the judgment, you should also remember that this judgment was probably in the judgment was this case was argued in the month of November, but yes, it has been pronounced on 5th May because two important judgment is being pronounced by Honorable Delhi High Court on 5th May, right? Yes, so we should also consider that this AAP judgment is being challenged in Supreme Court, as you said. Then Rule 61, relevant sub rule is being notified. So let us wait. So I'm again suggesting that we must, as a GST consultant, we must be very sensitive regarding availment of input tax credit, and we should try to comply all attached conditions and restrictions as far as possible, because otherwise department will initiate litigation, and litigation cost is very high, right? Till that time you will not be able to utilize that credit. So we must be very sensitive and careful at the time of examining up condition and restriction as far as input tax credit is concerned. सर सेकंड क्वेरी मेरी पर्सनल थोड़ी क्वेरी थी। जैसे सर जेके मित्तल सर की एक सेशन अटेंड कर रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ट्रांजिशनल क्रेडिट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है तो सिद्धांत इंटरप्राइजेस और जो एडवर्ड टेक्नोलॉजीज की जो गुजरात हाई कोर्ट के केसेस थे उनको सपोर्ट में लेते हुए उन्होंने बोला था कि अगर वो आईटीसी के डेफिनेशन में नहीं फॉल करता है तो डिपार्टमेंट ट्रांजिशनल क्रेडिट रिवर्स करने के लिए सेक्शन 73 या 74 में नोटिस नहीं इशू कर सकता है। तो सर उसकी वैलिडिटी सर कितनी होती है सर? अगेन नितिन, मतलब आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हम सबके गुरु हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो उसके आगे तो कुछ हम लोगों की हैसियत नहीं है, मतलब कम से कम आई एम नॉट इन पोजीशन, बट आई एम एंडोर्सिंग हिज ओपिनियन। व्हाई आई एम एंडोर्सिंग हिज ओपिनियन? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 140 ट्रांजिशनल क्रेडिट, right? Transitional credit means that amount was eligible input tax credit for existing law. In the other words, if you will recall section 140 subsection 1, it is saying that reported credit and any unutilized input tax credit reflecting in service tax return, excise return or VAT return. So
eligibility of that credit can be tested under respective law only. Once you will correlate section 140 subsection 1 with section 73, 74. 73 and 74 deals with the situation where department is going to initiate recovery proceeding or proceeding for non-payment, short payment, erroneous refund of what? Short payment of what? Short payment of tax under GST law. Yes, Migrated credit is not credit under GST law. Right? So in this context, it is important that whether input tax credit is vested right or not. So one point is very clear, that migrated credit is vested property. Now, when you are examining available input tax credit in your input tax credit ledger, say पूरा का पूरा क्रेडिट अभी लेजर में पड़ा है, आपने कोई यूटिलाइज नहीं किया हुआ है. So one part is migrated credit, another part of credit is credit availed under provision of GST law. Are you getting my point? yes sir. So as far as migrated credit is concerned, department can verify only conditions which are being specified under section 140. For example, उतना बैलेंस पिछले रिटर्न में आ रहा था, नहीं आ रहा था, 6 महीने के रिटर्न गए थे या नहीं गए थे, नॉन एलिजिबल क्रेडिट अंडर इसमें तो नहीं है. इसके अलावा कोई भी पावर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, सो आई एम ऑल्सो ऑफ द हम्बल ओपिनियन दैट वॉट एवर माई सीनियर हैज सेड, आई एम टोटली एग्री. अभी तो बहुत सारे आप केसेस देखते हैं कि डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड, जीएसटी ऑफिसर इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ माइग्रेटेड क्रेडिट and they are asking about relevant invoices, relevant records. Say, for example, at the time of scrutiny, GST officer has found that credit of X amount is not supported by appropriate invoice of central excise or service tax. So, can you initiate proceeding under GST law? I am of the humble opinion, no. Yes. Right, Nitin? Ji. So, until we are not yes, getting sir. any contrary opinion from Supreme Court or other court, we should follow the opinion expressed by our senior. जी सर. सर छोटी छोटी थोड़ी सी क्वेरीज है सर. जैसे एक क्वेरी है कि जो आरसीएम सर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो टैक्स था 17-18 का, उन्होंने करंट ईयर में पे किया है, तो उसका क्रेडिट करंट ईयर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे इस क्वेरी को एक दूसरे तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं जी, कि क्या आरसीएम के केस में जो टैक्स का पेमेंट हमने आरसीएम में किया है, क्या उसमें 16(4) अप्लाई करता है या नहीं करता है? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? जी. प्लीज रिकॉल माय इनिशियल डिस्कशन वेयर आई डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स इंक्लूड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) and 9(4). So there is no doubt that it is part of input tax, right? But section 16(4) deals with supply of goods and services or both. It means that section 16(4) is not applicable in case of testing of eligibility of input tax credit on tax paid under RCM. Someone may argue that even in case of RCM, we have to issue invoice. Correct, na? जी सर. But this is self-created, self-generated invoice. बिल्कुल बिल्कुल. है ना? And please consider another aspect of this whole discussion, that input tax credit on RCM is subject to payment, right? So, yes. I am of the opinion that in case of
eligibility of input tax credit on RCM, section 16(4) is not applicable. सेम केस है, सेम केस में कि मेरा भी मानना कि सेल्फ इनवॉइसिंग का जब केस है तो 16(4) इसमें आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से. सेल्फ इनवॉइसेस इज ओनली फॉर कंप्लायंस की आपको रिटर्न वगैरह कैसे फाइल करना है. सो इंटायरली इन डिफरेंट सिनेरियो. सर और एक क्वेरी है सर कि जैसे कुछ इम्पोर्टेड गुड्स हैं, वो अगर जब लॉकडाउन हुआ उसके पहले से वो पोर्ट पे पड़े हुए थे, लेकिन अभी तक वो एसएससी के पास पहुंचे नहीं है, तो एसएससी उसका क्रेडिट ले सकता है कि नहीं ले सकता है? Yes. See, that's a very good point. Probably I have to discuss this point earlier also. See, notification 35 dated 3rd April 2020 is very important, right? And which part is more important? The part where they are dealing that this relaxation shall not apply in following cases. Are you getting my point? It includes Yes, sir. section 10, it includes section 25. Okay. So Yes, sir. the one important criteria to avail input tax credit is that goods must be received by the recipient. Right? Now, this compliance is not possible due to COVID-19. Notification 35/2020 is there. Any condition, if that condition is not falling under exclusion clause of relief, then you may avail the credit, you may avail the benefit of this notification. ओके सर. अब सर एक और क्वेरीज है कि जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का जो केस है कि जो हमारा मिल्क जो है उस केस में, जैसे मिल्क हमारा एग्जेम्प्ट है, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो टैक्सेबल है, उस केस में जो क्रेडिट है वो कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा सर, उसके रिगार्डिंग क्वेरी है यहाँ पर सर. मेरे ख्याल से probably my friend is trying to understand that if I am engaged in supply of taxable goods as well as exempt goods. Exempted, बिल्कुल सर. Exempted goods, right? So we should recall section 17 read with section rule 42. Rule 42 is prescribing procedure to calculate eligible credit. You have to calculate 8 factors: T1, T2, T3, T4, C1, C2, D1, D2. जब पहली बार मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये मैं जीएसटी रूल पढ़ रहा हूं या कोई मैथ का सवाल लगा रहा हूं. It appears, है ना? C1, D1, D2. Yes, I said, and after incorporating provisions relating construction sector, this rule become more complicated. So that's why I had decided that I'm not going to discuss rule 42 in detail because it required a separate session for discussing rule 42 or 43. So बहुत vast. So I'm of the opinion that if you are in a situation where you are engaged in taxable supply and exempted supply, then you should calculate eligible input tax credit in accordance with rule 42. What I can do that I will share my this PPT with all of you, and the second part of PPT is dealing with reversal calculation of eligible input tax credit under rule 42 or rule 43 in very easy manner, right? So you may take help of this presentation, although I'm not discussing in detail, but presentation is there. Yes, Nitin. Hello. Yeah, sir, he's connected. He has some network glitch. So we have further questions online. Yeah, please. Via YouTube. So when Anand Mohan ji is asking regarding CC has claimed input tax credit as per GST 2A. However, the input tax credit claimed through 3B is less than as per 2A. This input is allowed as per through GST 9. I guess he's.
Sir, he's asking, I 69 guess, about the pending credit. He's trying to ask whether we can claim input tax credit through GSTR 9 annual return. Right. No. वही क्वेश्चन No. Right, sir. No one can GST claim को input tax credit through annual return. Only place to claim, only you can claim input tax credit through GSTR 3B. Yes, sir. But I am not able to understand why he is trying to compare 2A with 3B. But anyhow, क्या सर कहने का मतलब वही है कि फ्रेश क्रेडिट जो है मैंने क्रेडिट में क्लेम नहीं किया मैं 9 में क्लेम करता हूँ 9 से तो नहीं क्लेम कर सकते हैं. I guess sir, he would be referring of a period जिनमें 3B claiming from 3B is not now available. Maybe it's of financial year 18-19, and the period through which he could have claimed via 3B has gone. So he's expecting ki can it be allowed via GSTR 9? So let's make it very clear that once you are not eligible for availing input tax credit, right? First, you should try to examine whether you are eligible to avail input tax credit or not. If you are not eligible to avail input tax credit, then format of claiming is not important. 3B or GSTR 9, right? GSTR 9 is not a place to claim fresh input tax credit, right? So, अगर आपका input tax credit section 16(4) से section 17(5) से या किसी दूसरे सेक्शन में eligible नहीं है, तो ना आप 3B से ले सकते हैं और ना GSTR 9 से ले सकते हैं. जैसे सर लास्ट क्वेरी जो है वो मैं ले रहा हूँ सर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे सर. लास्ट क्वेरी सर है कि अगर कोई आदमी की एक ब्रांच जो है वो टैक्सेबल गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी ब्रांच जो है एग्जेम्प्टेड गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या एग्जेम्प्टेड गुड्स वाले ब्रांच का जो क्रेडिट है वो टैक्सेबल गुड्स वाले ब्रांच में यूज कर सकता है? No, because if you are procuring input intended to be used for exempt supply, yes sir, so you are not eligible, है ना? Otherwise तो कोई आदमी कोई no, not possible. हाँ, अदरवाइज मतलब कुछ लोग हमसे ये जरूर पूछते हैं कि मान लीजिए आपने बिहार में एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, राइट? आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आपने एडिशनल ऑफिस की तरह जोड़ रखा हुआ है, राइट? तो क्या कि उनका सवाल ये रहता है कि साहब इसकी क्रेडिट मिलेगी, ए प्लेस की मिलेगी, बी प्लेस की मिलेगी, सी प्लेस की नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हम लोग हमेशा ये जवाब देते हैं कि साहब आपने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में ले रखा है, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट वाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है. सारी क्रेडिट आपकी एक जगह रिफ्लेक्ट हो रही है जी. केवल आपको ये टेस्ट करना है कि जो क्रेडिट आपने लिया है वो एलिजिबल क्रेडिट है कि नहीं है. एलिजिबल क्रेडिट के लिए हम आपको 3 बजे से समझा रहे हैं, सेक्शन 16, 17, 18, है ना? ये सारी चीजें आपको देखनी है जी. सर आप आगे बढ़ते, वैसे लास्ट है, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो प्रोनाउंसमेंट था रिलायंस मेटालिक के केस में, जो ट्रान 1 का जो डेट उन्होंने 30 जून तक कर दिया है, आप उस पर थोड़ा सा लाइट थ्रो कर दीजिएगा अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो. यस पक्का. मुझे अगर नितिन मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिला देना, एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट, राइट ना? श्योर. यस सर, आप आइए सर. Section 18 and Section 19, I'm going to discuss these provisions in the light of COVID-19, meaning thereby there are certain procedural requirement, और अगर वो आप COVID-19 की वजह से नहीं कर पाते तो क्या सिचुएशन होगा. Let us try to examine Section 18 subsection 1 clause A. ये किस सिचुएशन को डील करता है? ये सिचुएशन को ये डील करता है कि इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ जीएसटी एंड ड्यू टू एनी रीजन नाउ यू आर लाइबल टू पे, you are become liable to registration. से मेरी टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम थी या 40 लाख रुपए से कम थी, जो भी है, से अप्रैल 2020 में आपको एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते. कोई ऐसा ऑर्डर है जो कोविड-19 में आपको मिल गया, लेकिन आप किसी वजह से, चूंकि आपका ऑफिस नहीं खुला, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं.
ये सेक्शन आपको ये बेनिफिट देता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबिल होते हैं और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते हैं और आपको मिल जाता है, तो जिस दिन आप जीएसटी के लाइबिल हुए उस दिन जो इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड, इनपुट कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। My observation is that please appreciate a situation where you become liable for registration but failed to obtain or failed to apply due to COVID-19, and say you are going to apply registration after say 15th May 2020, तो क्या आपको जो स्टॉक में इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश उसका क्रेडिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? क्या नोटिफिकेशन 35 आपकी कोई मदद कर पाएगा कि नहीं? मैंने ये पर्टिकुलर प्रपोजिशन इसलिए लिया था सो दैट मैं ये क्लैरिफाई आपको कर सकूं कि जब से आप नोटिफिकेशन 35 पढ़ेंगे तो उसके जो बेनिफिट के एक्सक्लूजन क्लास में सेक्शन 25 का भी रेफरेंस है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 25 में और आप रजिस्ट्रेशन को नहीं ले पाते हैं, उसका प्रोटेक्शन, उसकी रिलीफ नोटिफिकेशन 35 में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप उस सिचुएशन में आ रहे हैं जिसका रेफरेंस सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में है, then it is advisable, it is mandatory to apply registration within due time, otherwise you shall not be eligible to take input tax credit on input tax reflecting in your input contained in semi finished goods and finished goods. However, in case of other sub clauses where ITC is admissible subject to filing of GST ITC 1 or certificate of a chartered accountant where claim of input tax credit exceed 2 lakhs rupee. Now, these two requirements are procedural requirement. अगर आप ITC 1 या चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट फाइल नहीं कर पाते हैं, then you are protected by notification number 35 because these clauses are not being excluded in notification 35. Section 19, again very important, which deals with transfer of goods or capital goods by principal to the job worker. There are various conditions, various compliances, but I am dealing only with a practical situation where your material or capital goods is lying with your job worker, and it is the requirement of the section 19 that such material must come back. Principal should receive these material or capital goods in case of input within 1 year, in case of capital goods within 3 years. Otherwise, such material which is lying with job worker beyond 1 year or capital goods beyond 3 years shall be deemed as supply. And once deeming provision is there, meaning thereby a registered person, we may call it principal, is liable to discharge GST on such input or capital goods in the capacity of supplier. I appreciate the fact
that the moment you will get back that money, that material, then reversal is there. But my only submission or my clarification or my humble suggestion is that if the period of 1 year or period of 3 years is expiring between 20th day of March 2020 to 29th June 2020, लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, मूवमेंट हो नहीं रहा है. Say if I am going to file my GSTR 3B for the month of April 2020 और अप्रैल के महीने में कुछ मटेरियल मेरा जो जॉब वर्कर के पास गया था वो 1 साल से ज्यादा हो गया, whether I should treat it as taxable supply and I should discharge my GST liability, or there is some relaxation under section 35, under notification 35. Friends, again this is the unique proposition where your notification 35 is very relevant, because exclusion clause is not containing section 90, meaning thereby there is no requirement to treat such material, such supply as deemed supply till 29th day of June 2020. 29 जून तक अगर आपका वो मटेरियल आ जाता है तो अप्रैल के महीने में, मई के महीने में उसको सप्लाई मानने की जरूरत नहीं है. At this point, my humble request to all of you that now you can work out procedural requirement, other requirement to avail input tax credit, or requirement of any other section of the GST Act, and to compare with relaxation notified in notification number 35, then you can easily find out which areas are being covered by notification 35 and which areas are not covered by notification 35. Recently there is a circular, latest circular, where government has clarified a particular proposition, and where they are saying that this proposition is squarely covered by notification number 35. So in the scenario of COVID-19, there is welcome clarification, welcome notification from the government, and we must try to take benefit of that notification. I have been assigned topic input tax credit as well as input service distributor. I will discuss this concept of input service distributor within few minutes so that at last we can discuss judgment of the Supreme Court as referred by my friend Nitin. Friends, input service distributor, which I usually call it ISD, this concept is not a new concept. This concept was available in the case of in service tax era. और जब कभी हम किसी सेमिनार, किसी वर्कशॉप में डिस्कस करते थे तो हम हमेशा कहते थे कि जो ISD कॉन्सेप्ट है एक तरीके से वेलफेयर बेनिफिशियरी प्रोविजन है. सेम concept is being notified, incorporated in GST law. What is the meaning of input service distributor? ISD means an office of the supplier. They are not saying place from where you are making taxable supply. Means an office of the supplier of goods or services or both, which receives tax invoice.
Because there are number of confusions regarding ISD. Say I am trying to take a credit as ISD on purchase of material. Now question is whether such material should be received in the office registered as ISD. Answer is no, because they are saying that the office which receives tax invoices, not goods, not services, issued under section 31 towards the receipt of input service. Again, I should correct myself that input service concept of ISD is applicable only in case of input services. This concept is not applicable in case of input or capital goods. Tax audit fees, charges by your bank, say processing charges. Normally, bank used to issue invoice in the name of head office or registered office, from where you are not engaged in supply of any goods, services or taxable services. So अगर ISD concept नहीं होता तो वो मेरा input tax credit बेकार चला जाता. So input service distributor means an office of the supplier of the goods or services or both, which receives tax invoices issued under section 31 towards the receipt of input services and issues a prescribed document for the purposes of distributing the credit of central tax, state tax, IGST, union tax paid on said services to a supplier of taxable goods or services are both having the same permanent account number. Friends, ISD benefit is available only on input services. One point is very clear. Another important point is that you can distribute this credit to your other segments, other part of your business having same permanent account number. You cannot transfer this benefit of ISD to other registered person having another permanent account number. Not at all. There are certain procedural requirement. The number one is that if I am interested to take benefit of ISD, I have to apply and got separate registration as a ISD. If I am running my factory in Patna and my registered office is Muzaffarnagar, I am already registered under provision of GST for Patna workshop, Patna factory. This registration will not be sufficient for taking benefit of input service distributor. You have to apply for ISD registration separately. The second important point is that there is no concept, there is no provision for migration of credit of input service distributor. से आप पहले से ही सर्विस टैक्स में अगर ISD में रजिस्टर्ड थे, इसका रजिस्ट्रेशन का माइग्रेशन परमिसिबल नहीं था. I had attended a particular case where my client was registered under ISD under provision of service tax law. There was unutilized input tax credit under ISD. And after notifying this GST law, my client has migrated the credit of the ISD. Department objected that you are not eligible to migrate this credit. When we countered this non-eligibility, they said that there is no provision for migration of registration under ISD. We said that unutilized input tax credit reported in my returns under the provisions of service tax, there is no debarring. Although matter is still pending with appellate authority, but I am confident that matter will go in our favor. So first point is that you should obtain a separate registration. There is no threshold limit.
And there is a prescribed manner how to distribute inputs in IST credit. For understanding, for examining the manner of distribution, we should appreciate two propositions. One, where location of ISD and location of the unit where you are interested to distribute the credit is located in same state. Then IGST should be distributed as IGST, CGST should be distributed as CGST, state GST as state GST, and UT GST as UT GST. However, in case of location of distributor and receiver is in different state, in that case, IGST, CGST, SGST, UTGST accumulated in the hand of ISD should be distributed and shall be distributed as IGST through appropriate document, and such document shall be treated as eligible document under Rule 36 of CGST Rule 2017. There are certain restrictions, and the most important restriction is that you cannot distribute credit more than available credit, and available credit should be distributed in the same month along with non-eligible input tax credit. There is a prescribed return in form GSTR 6. This is the monthly return. There is a time limit for filing up GSTR 6. My humble request to all of you that we should take the benefit of the concept of IST, because this is beneficiary provision. If you are not going to obtain this registration, then believe me, you are going to lose something. Having registration under ISD, there is no cost, there is no problem except to file the return. So all of us should scrutinize our clients' position of and status of our clients, and we should suggest our client that they should take the benefit of this IST. Friends, I think that we may discuss the judgment of Delhi High Court. Nitin, are you there? Yes sir, yes sir. Delhi High Court Reliance Metallic का जो केस था सर, जो ट्रांस क्रेडिट को लेने की एलिजिबिलिटी जो है 30 जून तक करता, और उन्होंने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन भी दिया कि आप इसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट कीजिए। तो लोगों का कहना है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है, क्या हम और किसी और स्टेट में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट में तो वो हाई कोर्ट का डिसीजन है नहीं। So I always appreciate a knowledgeable person like you, because it is very value addition for a speaker like me. Friends, judgment referred by my friend Nitin, ये 4 रिट पिटिशंस थी, और कॉन्सेप्ट जो फैक्ट्स ऑफ डिस्प्यूट ये था कि सेक्शन 140 में जो क्रेडिट लेने की लिमिट थी, इनिशियली 90 दिन, फिर 90 दिन को एक्सटेंड किया गया, एंड अल्टीमेटली इफ आई कैन रिकॉल subsection 1A was inserted on 31st March 2019. Yes, sir. So from time to time we got various judgment from number of high courts,
But what is the difference between this judgment and earlier judgments? In earlier judgments, there was a concept or idea that petitioner was arguing that I was not able to file my Tran 1 due to technical glitches or like this. Now, in this judgment, Honorable High Court has said that the term technical glitches is a very broad phrase. Yes, sir. Yes, sir. Technical glitches includes non-understanding of law. In this judgment, if Nitin, if you will read this judgment, Honorable sir, Court yes, has sir. referred a particular situation where he said that there may be a situation Limitation where Act की बात करता है, sir. Limitation Act की बात करता है. Delhi High Court ने Limitation Act का use किया. I'm coming on that point, Nitin, but there is a very important observation where Honorable Yes, Court sir. has said that कि एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपका रजिस्टर्ड पर्सन गांव का है, कस्बे का है, इंटरनेट बिल्कुल, नहीं आ बिल्कुल. रहा है, बिजली नहीं आ रही है, और उसकी वजह से वो टाइम से ट्रान 1 नहीं फाइल कर पाया, उसको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, वो ट्रान 1 नहीं फाइल कर पाया. क्या ये सारी रीजन भी टेक्निकल ग्लिचेस है या नहीं? So Honorable Court has said that forget all those propositions. There is a Limitation Act, and in general proposition, in general clauses, there is a time limit of 3 years. So Honorable Court has said that for availment of input tax credit under section 140 read with subsection 1A, time period is 3 years from date of notifying this act, meaning thereby up to 30 June 2020. Now the important question is whether a registered person having location in UP and Bihar or Jharkhand, Chhattisgarh, whether they can take benefit of this judgment or not. I think answer of this question is being replied in this judgment itself. Honorable Court has said that this benefit shall be extended to all taxpayers. Benefit is not limited to the petitioner. And Honorable Court has said that, rather I should that court has directed to the government and concerned authorities, yes, sir. है ना, कि आप इस जजमेंट को एडवर्टाइज करिए, इसको पब्लिश करिए, सो दैट मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले सके. नाउ आई एम कमिंग ऑन लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस जजमेंट. हमें अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए? मुझे लगता है इतना बढ़िया जजमेंट आने के बाद there is no question to have any doubt in our mind. We should claim it, and if we are getting any objection from revenue side, then we should rely this judgment. Even if they are not admitting my credit, then we should approach our jurisdictional high court. The only key question is, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यक्ष प्रश्न, कि इसको अवेल कैसे करें, whether system will permit us. Although government and GSTN Limited is being directed to provide some mechanism, but even though, what I will suggest that if you are not having any mechanism, technical part is not permitting you to claim, we should write a letter to the jurisdictional officer that this is my claim of input tax credit under section 140, and as per this judgment, this claim is within my time limit, right? At least this communication should be made with the department, right? Nitin, I hope that I was, yes, sir. जितना भी मुझे लिमिटेड समझ थी उस जजमेंट की, जितना मैं पढ़ पाया था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. नहीं सर, बहुत बढ़िया. लगता है कि सब कुछ मुझे लगता है कि टाइम भी हो रहा है और बाकी पीपीटी है. अगर कोई क्वेश्चन हो नितिन तो मुझे जरूर बताइए. और सर एक क्वेरी और है सर, लास्ट क्वेरी है. लास्ट क्वेरी ये कि एक किसी एसएससी ने एक स्टेट में अगर बिजनेस शटडाउन कर दिया है और वो सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरे स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन दे रहा है उसमें कैसे वो इनपुट ट्रांसफर करेगा?
See, there is no concept of transferring input tax credit from one state to another state. Yes, sir. Right, Yes, and sir. particular the situation where you are closing down your business, right now, because Yes. अगर आपके दो स्टेट में ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं, then it will be treated as a distinct person. Yes, sir. There may be a situation. I'm not saying that everyone should follow it and it depends on fact to fact, but there may be a situation where one state person registered in one state is providing certain taxable services to another state. You're getting my point now? Yes, sir. Yes, sir. In that way you can transfer, otherwise there is no scope. Now, sir, और तो query नहीं sir. Now I think you should conclude the session, sir. So let me thank everyone, particular Patna branch, Ranchi branch, Jamshedpur branch, Dhanbad branch. मैं किसी समय धनबाद कई बार बहुत बार गया हूं, बट इधर कुछ सालों से मैं नहीं जा पाया. मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. बहुत धन्यवाद मैं नितिन को देता हूं जिसने मुझे बड़ी मदद करी पूरे प्रेजेंटेशन में. और थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. आप धर्मेंद्र सर को सुन रहे थे, कंक्लूड हो चुका है. हर आप कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम जो क्लॉजेस है उसको हम पकड़ के चले, और हम कोशिश ना करें कि जाए. हेलो हेलो हेलो. हाँ नितिन. नितिन जी नेट लगता है उनका डिस्कनेक्ट. ओके टेक्निकल ग्लिच है नितिन जी. वो टेक्निकल ग्लिचेस या अंश सम. अब हमारे आ गए नितिन जी, आ गए. हो गया. Nitin is not there. नितिन जी तो नहीं है लगता है. Pankaj, you may conclude and Mukul is there. It was a great and amazing session. It was a much awaited session about ITC, and people had many doubts regarding ITC, and much elaborated that Supreme Court case also, our input service distributor, and in case of services also. It was properly explained, and I guess the viewers and also we got the whole details. Nitin ji also raised quite good questions raised by the participants, and these were truly and correctly replied and answered. And I guess all the issues that were pending and all the issues that were being raised have been clarified. It was an amazing session with you, sir, and we'll hope after this lockdown ends, we would be expecting ki we can have you personally available in our branch, and we can have many more of these sessions. Sure, Pankaj, sure. So with these lines, I would like to conclude, and thanks Thank all you, everyone. branches Thank to you. be participating in Thank the program. Thank you very much. Good evening. Thank you, Mukul. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, Dharmendra sir. Thank you. Thank you. Thank you, participants.